ऐसे दिख रहे देखो तुम। स्टार्ट करो क्या मैडम? स्टार्ट तो हुआ ही, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ मैडम। हाँ क्या? हाँ, उसको हाइड करो। हाँ, अभी तुम मेरा प्रेजेंटेशन का पेज ओपन करके रखो। फुल स्क्रीन करो। F5. Okay. Good morning all. I am Rukaiya Adate. On behalf of Institutions Innovation Council, I welcome all the students and faculties for today's session. It's a great pleasure for me to introduce our today's speaker, Professor Maslekar TD. She has a wide experience of teaching, more than 13 years. She is presently working as head of civil engineering department. She has completed the training of innovation ambassador arranged by Ministry of Education. She has presented 6 papers in national journals, and also she has successfully handled various academic and administrative responsibilities of institute as well as university. So let's start the session. I welcome you, ma'am, for today's session. Ma'am, please start the session. Thank you, ma'am. Good morning, all. Once again, I welcome all the students and faculties for this session on achieving problem solution fit and product market fit. So it's a great pleasure to interact with you, students and faculties. We are running this program under Institution Innovation Council. Under this Institution Innovation Council, we are running various courses such as webinars, seminars, workshop from the last 2 years. And as a result of it, we have gained a good rank in the IIC ranking. So once again, I sincerely express my thanks to our management and IIC for giving me this opportunity to interact with all of you. So let us start the session. Today's topic is achieving problem solution fit and product market fit. So what is the necessity of keeping such a kind of seminars or webinars? So students, we know that economy of a country sometimes depends upon the entrepreneurs or the products which the country is launching. Correct. So if we want to increase the economy of our country, we have to produce more number of entrepreneurs. If there are more number of entrepreneurs, definitely the country will be in the category of developed one. Now we are in a stage of developing country. Correct. If we want to become developed, then we have to focus on entrepreneurship. उद्योजक हम बहुत जितने ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसमैन प्रोड्यूस करेंगे तो उतने ही ज़्यादा हमारे कंट्री का इकोनॉमी है बढ़ेगा और इससे कंट्री की वैल्यू भी बढ़ेगी. So this is nothing but the ultimate motto or aim of AICT or Ministry of Education, that they have introduced in higher education this Institution Innovation Council to produce more number of entrepreneurs. Correct. Now in this session, I am focusing on basically two topics, that is problem solution fit and product market fit, and business model fit that will be discussed later. So if you want to become a successful entrepreneur, then first of all, you have to identify a problem of the society.
what is the problem faced by the society. That may be a problem of society or the problem of you are facing by as an individual, or you can solve the problem of which is faced by uh, your colleagues, or you can solve your problem which is faced by your family members. Okay. First of all, the first step to become an entrepreneur is nothing but the identification of problem. And after identification of problem, now the next thing, we have to find the solution which is correctly fitting to the problem. Then after that, next step is after finding the solution, we have to convert the solution into product, and then identify the market, and we have to correctly match up the product and market. Correct. Product market fit. Whatever the product you are launching after the solution, it must fit correctly to the market. And after these two fits, identification, correctly identifying the problem solution fit and product market fit, then you can go for business model fit. So if any student or a person want to become an entrepreneur, he or she must follow these three steps, then definitely he or she will become a successful entrepreneur. Now, first of all, we will discuss problem solution fit. If the first step is you have to identify the problem, correct? You have identified the problem and now you want solution for that particular problem. Then, for finding the solution for that problem, you must know the concept of design thinking. What is design thinking? It is a method of creative problem solving. Correct? So problem solving is here, but it's a creative problem solving. It draws upon logic, imagination, intuition, and systematic reasoning to explore possibilities of what could be and to create desired outcomes that benefit the end user. Having empathy as a key filter. करेक्ट. जो भी साइंटिस्ट लोग हैं, जो भी क्रिएटिव टाइप के लोग हैं, इमेजिनेशन पे जो काम करते हैं, सिस्टमैटिक रीजनिंग पे जो काम करते हैं, सो दे वर्क by this method of design thinking. And ultimate, that is the last part is very important here, that is benefit to the end user. मतलब जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, ये किसके लिए लॉन्च कर रहे हो? एंड यूजर के लिए. तो एंड यूजर के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेनिफिशियल होना चाहिए. और एम्पैथी एज अ की फिल्टर, दैट इज नथिंग बट यू हैव टू कीप ह्यूमन सेंटर्ड प्रोडक्ट. मतलब जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो एज ए ह्यूमन बीइंग के लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो वो पॉइंट हमको ध्यान में रखना है. वो पॉइंट ध्यान में रख के हमको प्रोडक्ट लॉन्च करना है. So that is this is the design thinking, creative method of problem solving. If we apply design thinking while solving the problem, then definitely we can get a good solution. Now, next is what is design thinking? Initially, we defined it, but we can elaborate it. We know that there are two types of thinking. That is, first one is analytical thinking, by which we can get the systematic and organized ideas for the problems. And the second one is intuitive thinking, which gives us the valid or creative ideas. And the design thinking lies in between this analytical thinking and intuitive thinking. करेक्ट है. एनालिटिकल थिंकिंग हमको एग्जैक्टली सिस्टमैटिक आइडिया देते हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, उसका ये सोल्यूशन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता. और इंट्यूटिव थिंकिंग क्या करता है? यहाँ पे हमको क्रिएटिव, जरा से हटके आइडियाज वैलिड देता है, लेकिन हटके डिफरेंट आइडियाज हमको यहाँ पे इंट्यूटिव थिंकिंग देता है. और ये सिस्टमैटिक अप्रोच और वैलिड अप्रोच, ये दोनों के बीच में जो अप्रोच है या थिंकिंग है, उसको बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग. एंड इफ वी यूज दिस, देन डेफिनेटली वी विल गेट द solution which is better. For understanding the concept of problem and solution fit, now
we know that, or we have identified the problem of a society, and we have created or identified or developed one solution for that problem. But the thing is that there should be correct fit between the problem and solution. So if we want to understand it, let us consider the example of great innovation of a man, that is wheel. So how it was invented, how the invention of wheel was done in ancient time. So we can think that at the ancient time, people were facing the problem of collecting the water and storing the water. And then what happened? Some people gathered from a city or a town and they have discussed the problem and they approached a person which is wise, which was wise in the city, and the person was working on the stone ornaments or stone weapons. They approached to the person who is wiser and working on the stone machinery. And then they told the problem that we are facing the problem of collecting the water, storing the water, or putting the food items. So can you please give us the solution to this problem? Then the person started thinking, and then he discussed the same problem with another some wise persons, and then he prepared or he manufactured one wheel of stone, and then collected some mud, put the mud at the center of the wheel, and then revolved the wheel with the help of stick, and then prepared the pot, mud pot. That is the solution. What he had done, he created the mud pot, and that is nothing but the solution to the problem. That is, multiple people can use the pots, and multiple people can also prepare the pots by using the stone's wheel. So he have gave the solution to multiple people for multiple use, and definitely that solution has gained the popularity, and that is nothing but the great innovation of a man. So now we have to identify from this how the solution to the problem can be evolved. Now let us discuss about the concept of design thinking once again, because for getting the solution we have to work on design thinking. And the three three important aspects of design thinking, there is the viability, desirability, and feasibility. If you work by this one, then definitely your solution will be good one. So what do you mean by viability? Whatever the solution you are getting or identifying for the problem, it must work. It must be workable. It must be usable to the persons or to the society. That is called as the product is viable. है ना? जो भी आप प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हो वो काम आना चाहिए लोगों के. अगर वो लोगों के काम आता है, लोगों की नीड पूरी करता है, जरूरत पूरी करता है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन वायबल है. देन सेकंड वन, feasibility. That is nothing but the solution, whatever you are identifying for the problem, it is prepared or done with the help of locally available materials or with an affordable cost, then the solution is called as feasible. करेक्ट है. जो भी सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा या कम कीमत में हम बनाएं, और अगर लोकल मटेरियल से बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी. एंड द लास्ट वन, दैट इज डिजायरेबिलिटी. द सॉल्यूशन which you are finding, it must give the feeling of good to the customers, those which are using to it. That is called as desirability. करेक्ट है. जो भी सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो प्रॉब्लम को, वो जो कस्टमर उसको यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट को, तो वो आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? डिजायरेबल होना चाहिए. मतलब
कस्टमर्स को एक गुड फीलिंग देना चाहिए। जैसे कि कुकिंग का जब किया जाता है, कुकिंग जब करते हैं तो क्या सोचते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। तो क्या सिर्फ यही सोचते हैं कि फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए? नहीं, फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसके साथ उसका कलर भी अच्छा होना चाहिए, उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ डिजायरेबल। करेक्ट है। हम ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ न्यूट्रिशियस होना चाहिए, तो कलर भी होना चाहिए, टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, उसको बोलते हैं डिजायरेबल। और जब अच्छा कोई फूड आइटम बनता है तो इट विल गिव फीलिंग ऑफ गुड to the people, those who are testing it. That is the concept of desirability. Correct? Means you have to identify जो solution है वो हमारा वायबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, डिजायरेबल होना चाहिए। करेक्ट है। वायबल है, लोगों के काम आता है, लोगों की जरूरत पूरी करता है, लोकली अवेलेबल मटेरियल कम कीमत में बनाया जाता है और लोगों को अच्छी फीलिंग देता है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे सॉल्यूशन में है तो डेफिनेटली it will gain popularity and the product we are launching in the market definitely it will spread or the customers will get increased. The same concept we are once again revising. That is a problem solution fit, viability, desirability, and feasibility. Okay, what do you mean by viability? Ability to work and survive. Desirability, ability to feel good. And feasibility, ability to be conveniently done. करेक्ट, ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजों को अगर कंबाइन करते हैं हम सॉल्यूशन बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, then definitely our product will gain a market. Product must be viable, product must be desirable, and the product we are launching must be feasible. So let us combine this and convert your solution into a good product. Now the next part, that is how can we identify the problem and solution fit. प्रॉब्लम तो था मेरे पास, सॉल्यूशन भी मैंने निकाला है, लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन हो सकता है। okay? While learning engineering, you know that you can solve a problem by different way. अगर कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम दिया जाता है, you can solve it in different ways. करेक्ट है। अगर कोई बोलता है कि ये बीम का डिफ्लेक्शन निकालो, you can solve it by different means. There are various methods to calculate it, solve it. So likewise, if you are having problem, then उसके भी सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से मैच कर सकता है। एंड इफ यू आइडेंटिफाई द करेक्ट फिट between the problem and solution, definitely you will get a good product. Correct. So how can you identify the correct fit between the problem and solution? So thing is that not to stick to one solution for all over the world. Sorry, not to stick to one solution for all over the world. करेक्ट। एक ही सॉल्यूशन पूरे दुनिया के लिए लागू पड़ेगा? नो, ऐसा नहीं हो सकता। एज पर टाइम, स्पेस एंड लोकेलिटी चेंज द सॉल्यूशन। जैसे कि टाइम बदलता है ना। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर थे, उसके बाद आ गया सीडी प्लेयर गाना सुनने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट पेन ड्राइव में गाने डालने लगे लोग, उसके बाद अभी ब्लूटूथ के स्पीकर छोटे छोटे डिवाइस आए हैं, उससे भी सुनते हैं, या फिर आगे जाके क्या होगा मालूम नहीं। सो द प्रोडक्ट और द सॉल्यूशन मस्ट बी रिवाइज्ड आफ्टर टाइम, आफ्टर सर्टेन इंटरवल। इफ यू स्टिक टू दैट कि नहीं अभी हम टेप रिकॉर्डर पे ही गाना सुनेंगे तो चलेगा क्या? कहाँ मिलेगा आपको? टेप रिकॉर्डर मिला तो कैसेट नहीं मिलेगी। सो एज पर टाइम you have to revise the solution. Correct. Then space, as per position. ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, समझो अगर हम लोकेलिटी की बात करते हैं, शोलापुर के नियर मंद्रुप,
सिटी में कुछ प्रॉब्लम है और हमारे बच्चे जाके वहाँ पे मिले, लोगों से डिस्कस किया प्रॉब्लम, और समझो पानी का प्रॉब्लम था, उनके लिए कुछ फिल्टर वगैरह बना के दिया उन्होंने पानी क्लीन करने के लिए, और वही फिल्टर अब लोग लेके जा रहे हैं। मंद्रुप में तो दिया, लोगों ने यूज भी किया, अच्छी तरह एक्सेप्ट किया। अभी वही फिल्टर वो लेके जाते हैं और बोलते हैं पूना के नजदीक कोई विलेज है और वहां जाके बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे यूज करो, चलेगा? चलेगा क्या? नो। as per the position, as per the locality, your solution must be changed one. Then the problem solution fit you will get correctly. करेक्ट है? पोजीशन बदलता है, लोकेलिटी बदलती है, तो आपको आपका सॉल्यूशन भी चेंज करना चाहिए। ओके, इनोवेशंस इन सॉल्यूशन इज नीडेड। करेक्ट। अभी ऐसा नहीं कि आप एक ही बात को टिकाए बैठे कि नहीं ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका ऊपर सॉल्यूशन है, अभी इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। करेक्ट। अभी पुराने जमाने में ये माउस ऐसे थे, सिंपल माउस थे। उसके बाद इफ यू सर्च ऑन इंटरनेट you will get the various patterns and designs of mouse। करेक्ट है? तो कैसा है कि मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या था और सॉल्यूशन मिला है, लेकिन सॉल्यूशन को हम इनोवेट करते हैं कि नहीं। वही सॉल्यूशन आप थ्रू आउट लाइफ अगर बोलेंगे कि नहीं हमारा यही प्रोडक्ट है, आपको यही यूज करना है, नो। एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर, as per the feedback of customer, you have to innovate your solution and then your solution problem fit will again remain correct। solution must be updated or iterated at all time। करेक्ट है? वही मैंने बोला कि आपको उसको अपडेट करना है टाइम टू टाइम, इटरेट करना है, then the you will get the correct problem solution fit। okay, now we have covered the part of problem solution fit। what is the conclusion of this part? First of all, try to identify the problem faced by the society or locality। आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खुली आंख रख के इधर उधर देखना है। मतलब खुली आंख रख के देखना है मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा करके देखना है, नहीं। आपको आपके सेंसेस जो है उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से ये करके देखना है आपको, जो भी चीजें आपके आसपास होती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देंगे, सोसाइटी में, घर में, कॉलेज में, या आप बाहर कभी भी जाते हो वहां पे भी देख सकते हैं। वो प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो और उसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो या सर्विस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिजनेस करना मतलब कुछ प्रोडक्ट ही लॉन्च करना, नो। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एज अ सर्विस आल्सो। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, और ये जोमेटो सेक्टर मतलब फूड सर्विस सेक्टर, दिस इज आल्सो बिजनेस। करेक्ट है? क्या किया था जोमेटो वालों ने? उन्होंने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम। क्या किया आइडेंटिफाई? कि लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर नहीं जाए, अगर लोग बाहर नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए या फूड आइटम्स अदर खाने के लिए अगर बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों की टेंडेंसी है, उनको लगता है ऐसा कि घर पर ही मुझे अगर उस होटल का खाना मिलता है या कुछ फेमस है जैसे सुप्रजा पाव भाजी है हमारे सोलापुर एरिया में, तो वो अगर मुझे घर पर मिलती है तो कितनी अच्छी बात है, सब लोगों के फैमिली मेंबर के साथ बैठ के हम अच्छे से खा सकते हैं। तो उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि अभी तो कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे सोल्यूशन निकाले इसका? तो उस प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने काम किया और सोल्यूशन निकाला, एंड देन द सोल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द लोकेलिटी और नॉट द सिटी, इट इज एक्सेप्टेड बाय द कंट्री। करेक्ट है? पूरे कंट्री ने वो सोल्यूशन एक्सेप्ट किया, एंड देन द जोमेटो, स्विगी, दे हैव गेन द पॉपुलैरिटी। इसमें अच्छी बात है, लोगों का टाइम भी सेव होता है जाना आने जाने का, और ट्रैवलिंग कॉस्ट भी सेव होती है, पेट्रोल डीजल की बचत भी होती है। सो इट इज नथिंग बट द फिजिबल सोल्यूशन, डिजायरेबल, फिजिबल एंड वायबल सोल्यूशन। करेक्ट? लोगों के लिए काम करता है, लोगों का पैसा भी बचाता है और एक अच्छी फीलिंग भी लोगों को देता है। सो
we have to go for such a kind of solution. करेक्ट. और हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हमने ये पार्ट में सीखा है इन दिस पोर्शन और इन दिस पार्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट. वी हैव डिस्कस्ड दैट correctly identify the problems of society or your own or your friend circle, and then try to find out the solution to it while or by using the concept of design thinking. Your solution must be viable, desirable, and uh, that point you have to remember while finding the solution. And then the last part, keep the problem solution fit, means innovate the solution, update the solution from time to time. As per time, space, and locality, change your solution, and then your problem solution fit must remain constant. So this is the conclusion from the first part, that is a problem solution fit. Now let us move towards the next part, that is the product market fit. प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन निकाला, करेक्ट है. अभी उसके बाद इसको मार्केट मिलेगा क्या, ये हमको देखना है. करेक्ट. तो कैसे जाएंगे. So when we want to identify or when we want to discuss the product market fit, let us try to understand first what is entrepreneurship. उद्योजकता क्या है. Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize and run a business or an enterprise. कुछ तो हम डेवलप कर रहे हैं, कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वो सब करके हम एक बिजनेस या एंटरप्राइज रन कर रहे हैं along with any of its uncertainties in order to make a profit. बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है. वो हमारे जो माल जो ला रहे वो टाइम पे आएगा क्या नहीं आएगा, स्ट्राइक चल रहा है कहीं तो भी, ऐसे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है उसमें. वो अनसर्टेनिटीज को लेके हमको क्या करना है, प्रॉफिट बनाना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट. उद्योजक तो बन रहे नहीं, मैं खाली सोसाइटी का हेल्प करने के लिए आई वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर. नो, आई मस्ट गेन सम प्रॉफिट फ्रॉम इट. आई डोंट वांट एनी प्रॉफिट. ऐसा कोई बोलेगा क्या, नहीं मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं तो सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ. नहीं. सो इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट यू हैव टू रन योर एंटरप्राइज. द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस. बहुत बार लोग जो है जो ऑलरेडी बिजनेस चलते आ रहा है उसको भी एक्सटेंड करते हैं. वो भी डिफिकल्ट काम है. करेक्ट है. जैसे हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में होता है कि जो घर में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसको ही नई जनरेशन के लोग आगे बढ़ाते हैं. इट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. डोंट थिंक इट एज ए इजी वन, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है. अभी उसको आप उसको अच्छी तरह से आगे लेके जाना है. जैसे मैंने अभी बहुत सारे पॉइंट बोले थे, इनोवेशन करके, चेंजेस करके, टाइम के साथ बदलते, अगर आप अच्छी तरह से उसको आगे लेके जाते हो तभी वो बिजनेस आगे अच्छे से रहता है. करेक्ट है. बेस्ट एग्जांपल इज द धीरूभाई अंबानी एंड मुकेश अंबानी. करेक्ट. धीरूभाई अंबानी स्टार्टेड बिजनेस and then Mukesh Ambani drove in a very good manner to it. So that is entrepreneurship, ability and readiness to develop, organize and run a business or an enterprise. This entrepreneur word originated from French word entreprendre, which means to undertake, to collect, to organize, to run. Right? So that is the entrepreneur. And one who organizes, manages and assumes the risk of a business or enterprise, that is called as an entrepreneur. इस साइड को जाना उतना भी मतलब इजी नहीं है. जिसके पास रिस्क लेने की एबिलिटी है, लाइफ में रिस्क लेके चलना जिसको मालूम है, वही इस साइड पे जाने का सोच सकता है. करेक्ट. अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ ऑलरेडी ड्रिवन जो पाथ है, जैसे जॉब्स है, वेरियस जॉब्स, देन उस जॉब के ऊपर जाना चाहते हो, सो इट हैज लेस रिस्क. यू हैव टू गो ऑन टाइम,
You have to start your job, then come to the time, to the home. It's a secure one. You will get the payment monthly. Correct. बहुत सिक्योर है जॉब, लेकिन एंटरप्रेनर एक रिस्की एंड डेंजरस पाथ है. इस पाथ पे अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली यू विल बी कंसिडर्ड एज अ रिस्क टेकर. एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब गलत ही होगा, मतलब आपके खिलाफ ही होगा, ऐसा नहीं है. इफ यू गो बाय राइट वे ऑन दिस पाथ, देन whole world look at you, will be the role model for the others. Now the second part, that is technopreneurship. When a person adds technology in entrepreneurship, it is called as technopreneurship. Correct? Technology based entrepreneurship is called as technopreneurship. And if we want to elaborate this concept, let us consider the example of one product. Let us consider that somebody told you that I am having a device or a gadget through which you can call, make a call to the persons. Secondly, I am having another device through which you can listen songs, play songs. Third device I am having, by which you can observe the videos, you can watch the cinemas, movies, and with a great internet speed, you can watch all this. So then another, he or she said that if I combine all these three four aspects in one product, then what you will feel. करेक्ट है. मैं ऐसा एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ जो आप, जिसके अंदर आप गाना भी सुन सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, फिल्में भी देख सकते हैं, या वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं. इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड भी बहुत अच्छी है. एंड by this way the product is launched, that is called as iPhone. स्टीव जॉब्स ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उन्होंने ऐसी एडवर्टाइजमेंट की थी, एंड उसके बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, दैट इज कॉल्ड एज आईफोन. करेक्ट. एंड नाउ इट इज नथिंग बट द most sellable product in the market. So that person is using the technology in the entrepreneurship. Constantly he is using technology in the entrepreneurship, updating his product from time to time, launching new products by using the help of technology, and definitely which is helpful to the mankind. That is called as technopreneurship. So when we talk about the entrepreneurs, we will get lot of faces in front of us. So few of them I have added here. Microsoft, Bill Gates, who is the owner of Microsoft, one of the famous personality, role model for the people. And second one, that is the Sachin Bansal, Flipkart. When he started the Flipkart company, before that, initially he thought of the problem, that is that how can we provide certain items at the home to the persons. How can we develop one browser, or can we develop one system? And initially they have started selling the books through their company, only books. After that they have added few more items. Okay, means what? People go to their website, then demand some books, and then the books will be given or departed to the people. People are happy. He is also getting some income through it. Very good. After that, he has added another items to it, and nowadays Flipkart, Amazon, and other online platforms are gaining more popularity. Correct. In this pandemic, it was very helpful to the humanity. करेक्ट. उस वक्त लोग बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर निकलना मुश्किल था. नॉट इन आवर कंट्री, होल वर्ल्ड इज ब्लॉक्ड.
आपको एक ही जगह पे रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है इन द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक, देन हाउ कैन यू गेट दिस थिंग्स? अगर ये कंपनियां नहीं होती तो कैसे होता? सोचो, उस वक्त भी ये कंपनियां काम कर रही थी, ऑनलाइन मार्केट चल रहा था, और हमको घर बैठे बहुत सारे आइटम्स हमको मिल रहे थे. So that is the thing. They have solved the problem of society in a good manner. Ray Kroc, which developed the empire of McDonald. अभी कंट्री में ऐसी कोई भी सॉरी वर्ल्ड में ऐसी कोई भी सिटी नहीं होगी बड़ी कि जिसमें मैकडोनाल्ड का शॉप नहीं है. आप भी ख्वाहिश रखते हैं मैकडोनाल्ड पे जाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे. सो इनिशियली क्या आपको लगता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में ही सभी पूरे वर्ल्ड में उनके शॉप थे? नहीं. कहाँ से भी तो छोटे बिजनेस से स्टार्ट किया होगा. छोटा होटल होगा पहले, उसको फिर अ, बड़े में बनाया होगा, उसके फिर एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से ऐसा कर करके these hotel chains or McDonald, they have started their journey. Zomato, like Swiggy, Zomato, Dipinder Goyal, I already discussed with you how they have started their um, this company. Baiju, Baiju Ravindran, founder and CEO of Baiju Learning App, they have identified the problem. In our India, we are not having a particular platform where the students can log in and then they will get the material to learn, and in a very good manner. The person has identified the problem and he developed the app Byju's, and now it is gained more popularity among the student fraternity as well as the teacher fraternity also. And he is improving time to time the apps. And after opening the Baiju, he also uh, doing certain another businesses also in collaboration with Baiju. करेक्ट है. अगर आप एक बिजनेस में सक्सेसफुल होते हो तो आप वहां पे ही रुकोगे क्या? नहीं, अभी हो गया, अभी इससे आगे कुछ नहीं करना. नहीं, तो इससे आगे भी आप अपने बिजनेस को स्प्रेड करते हो, वाइड करते हो, उसके साथ और मार्केट भी ग्रैब करना चालू करते हो. So that is the thing here. Mukesh Ambani, the best example. Already, his father started the company, and then he again spread the company in a very good manner. बहुत अच्छे से काम चालू किया. हाँ, जियो का आपको मालूम होगा, 1 साल लोगों को इन्होंने कार्ड बांटे, कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी बिल नहीं पे करना है. हर एक विलेजेस में, हर एक, जबकि इंटरनेट का इतना ज्यादा विलेज विलेज तक इंटरनेट नहीं पहुंचा था, तब क्या किया अंबानी साहब ने? जियो यूज करो, 1 साल लोगों को फ्री में दिया, बाद में पैसा निकालने लगे. करेक्ट है. आदत हैबिचुअल बनाया लोगों को. सो दिस इज द मार्केट स्ट्रेटजी दे हैव यूज्ड, एंड दिस इज वर्किंग. कंपनी इज वर्किंग इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. वर्गसी कुरियन, फाउंडर ऑफ अमूल डेयरी, इंटरनेशनल प्रोडक्ट, अमूल के प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे बेचे जाते हैं. कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुंच गए? कुमार मंगलम, आदित्य बिरला ग्रुप. This Aditya Birla Group is also involved in various products such like Ultratech cement and another cement brands. Okay. Now, few days back in our Sholapur city also, we have one Malabar Gold and Diamond shop is launched, and therefore I have included this purposely. That is MP Ahmed, who is the chairman of Malabar Group. Under this Malabar Group, they are running various products, various companies, and one of them is Malabar Gold and Diamond. So, what you have to remember, these people created initially value to themselves. पहले उन्होंने खुद की वैल्यू बनाई है, and after that they have created value to their nation. They have increased the economy of their nation. करेक्ट है. समझो हमारे कंट्री में स्टीव जॉब्स है, या बिल गेट्स, या अंबानी, ऐसे 8-10 अंबानी अगर बनते हैं, हाँ, एक ही अंबानी है
तो ऐसे 10 अंबानी, 12 अंबानी या 15 अगर ऐसे एंटरप्रेन्योर बढ़ेंगे तो क्या होगा? कंट्री की इकोनॉमी मिलेगी, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा। जॉब मिला तो डेफिनेटली उनका जो जीवन मान जगने का स्तर है वो ऊंचा हो जाएगा। करेक्ट है। सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट country will develop more entrepreneurs. Definitely it will helpful to the country as well as to the people. Okay, so these are the role models for the people. What is actually entrepreneurship? It is nothing but the dangerous, dreadful drive like a roller coaster. Means sometimes you will be at a topmost position, at the next instant of time will be at the bottommost, and some portion you will be in the middle. Dreadful drive. करेक्ट है। यहाँ पे हमारे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक यात्रा होती है जनवरी मंथ में, उसको बोलते हैं गड्ढा यात्रा। वहां पे बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे आपने देखा होगा या बैठे भी होंगे ऐसे ड्राइव में, है ना? बहुत सारे ऐसे आइटम्स वहां पे आते हैं राइड के। तो कैसा लगता है जब आप उस राइड पे बैठते हो, रोलर कोस्टर पे? किसी भी तरह घूमता है वो, बहुत स्पीड से घूमता है। करेक्ट है। कभी आपको जर्क लगेगा, कभी आप ऊपर जाओगे, कभी आप नीचे आओगे, कभी बीच बीच में रहोगे, कभी उल्टा हो जाओगे। और जब वो राइड कंप्लीट करके नीचे उतरते हैं 5-10 मिनट तो कुछ सोचता ही नहीं होगा, है ना? लेकिन एक फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, यस आई हैव कंप्लीटेड। सो likewise entrepreneurship is a dreadful drive. समझ में आ रहा है आपको? ऐसा नहीं कि हर वक्त आप प्रॉफिट में ही रहोगे और आपके प्रोडक्ट हर वक्त सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, नहीं। कभी कभी आप लॉस में भी आ जाओगे, कभी कभी प्रोडक्ट आपके सोसाइटी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, फिर भी आपको कॉन्स्टेंटली उसमें रहना है। अगर आप टिके रहते हो, बने रहते हो, आपका पेशेंस खोते नहीं हो, तो डेफिनेटली you will get the good fruits of it. Okay, what is this? This is the Spenka water bottle. What is this? Parle-G. This is a product. iPhone or iPad. This is also a product. So this Spenka or the Parle-G, these are nothing but the products of a company. Now we want to learn what do you mean by product. Spenka is manufactured by certain company. Then Parle-G is manufactured by company. iPhone or iPad is manufactured by Apple. Correct? So these are the products of a particular company. Now we want to learn what do you mean by product. आगे जाने से पहले थोड़ा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, I have added this penka purposefully in this presentation because the company is run by one of our alumni, Mr. Suhas Admani, who passed from computer science department. करेक्ट। आफ्टर वो कैसे एंटरप्रेन्योर बना, करेक्ट, उसके उसके जर्नी के बारे में 1-2 मिनट डिस्कस करते हैं। दिस प्रोडक्ट इज आवर प्रोडक्ट, मतलब हमारे एल्यूमिनाई का प्रोडक्ट है ये स्पेंका। कैसे एल्यूमिनाई, कैसे वो एंटरप्रेन्योर बना, बिजनेसमैन कैसे बना? तो जब भी कॉलेज में थे सुहास अदमानी, तो उस वक्त बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। कल्चरल प्रोग्राम हो, भाग के गए जाएंगे, कुछ गैदरिंग का प्रोग्राम हो, भाग के जाएंगे, एनएसएस का प्रोग्राम हो, वहां पे भी जाएंगे। हर वक्त जहाँ पे प्रोग्राम हुए वहां पे पहुंच जाते थे। एंड ही विल he has organized a number of programs, he has participated number of programs. ओके, हर वक्त वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे। वहां से लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर बिल्ट हुई। ये उन्होंने बोला है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ट हुई और वो जानने लगे कि प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। कभी कभी फेल भी हुए होंगे, तो सेकंड टाइम he has corrected his mistake and then
After completing graduation, he thought of a business. He met to various persons. He increased his uh, community, or he increased his empire. करेक्ट है, वो अपना सर्कल जो है बढ़ाने लगे, हर लोगों के साथ मीटिंग करने लगे, उन्होंने अपना सर्कल बढ़ाया, मीटिंग्स बढ़ाए, और देन ही लॉन्च द प्रोडक्ट स्पेंका मिनरल वाटर, and now this product is gained popularity not only in Sholapur but in Maharashtra, and in my opinion I think it has gained the popularity out of Maharashtra also. So it's a good work, and I'm proud that our alumni student has started this company, and now he will be called at various places to give the lectures, to encourage the students to become an entrepreneur. So that is the product. We are talking about the product. Parle G is a product of company, iPad. What is a product? An article or substance that is manufactured or refined for sale, or a thing or a person that is the result of an action or a process. करेक्ट? जो भी आर्टिकल है या सब्सटेंस है जो हम बेचने के लिए बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. एंड द सेकंड वन, a thing or a person that is the result of an action or process. Correct? Here, a person is also called as product. Yes or not? Because I can say that after completing your graduation, 4 years graduation, will be called as a product of AGPIT Institute. Yes or no? Correct? Haan. In this means after completing your graduation, when you approach to the company, you say that I am from AG Patil Institute of Technology, and we will say that yes, this student is our product, because in this 4 year you will be taught many subjects, you will be given various characteristics, you will be added in by various technologies, various computer languages, communication skill. All these programs or all these features will be added into you by the institute, and then your raw product will be converted into final product, and then the product goes to the company for job. Correct? So you will also be considered as a product of institute. आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जैसे ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये भी इस कंपनी का प्रोडक्ट है. करेक्ट है? इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट मीन्स सिर्फ वस्तुएं हैं, चीजें हैं, नहीं. सर्विसेज भी प्रोडक्ट हो सकते हैं. करेक्ट है? ह्यूमन भी प्रोडक्ट हो सकते हैं. थिंग इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट. That is the product. So for launching a product, we must know the relationship between prototype and model. कुछ प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है, आपने प्रॉब्लम निकाला, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसका सोल्यूशन निकाला. नाउ यू वांट टू लॉन्च द प्रोडक्ट, so you have to prepare first prototype of it. So what do you mean by prototype? So this is one is you have to draw the drawings. This is a prototype, and this is nothing but the minimum viable product. After preparing prototype, you have to then manufacture the product. ये ड्राइंग बनाया, उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट बनाया, और उसके बाद उसको डेकोरेट किया है, क्योंकि ऐसा रखा तो बहुत बार कस्टमर नहीं लेंगे इसको, तो उसके बाद इसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. किसे? कि उसको सजाया है, कुछ डेकोरेशन किया है. So that is the journey, and the initial part is called as prototype, not a drawing. You can prepare a model, that is called as prototype. Now what are the characteristics of product? प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो द प्रोडक्ट मे बी अ tangible or intangible. What do you mean by tangible? You can touch it. Intangible, you cannot touch it. Now, this is a product, paperweight,
I can touch it. This is a tangible product. This is a product. Phone holder, I can touch it. Intangible. Here, you are using the Zomato, you are using Swiggy, you are using Gmail, and various products of Google. Correct? Google Meet, Google Calendar. All these are nothing but the products of Google, and those are intangible one. You cannot touch them. Can I touch the Zomato? Or can I go to the website and I have to touch it? No. So Zomato, Swiggy, online services, or Google, these are called as intangible products. And what is another characteristics of a product? So if you are launching a product, you have to put a serious intentional efforts for it. इंटेंशनली आपको बहुत अच्छी तरह से उसमें आपके एफर्ट देने हैं, तब जाके आपका प्रोडक्ट अच्छा बन सकता है. And product is nothing but an outcome of sustained continuous events of iterations in a product or service being offered. करेक्ट है. जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, मैंने पहले ही बोला है, उसको आप इटरेट करना है, अपडेट करना है टाइम टू टाइम. देन योर प्रोडक्ट will be good one, or that is nothing but the characteristics of product, peculiarity of product. Okay? कि आपको प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम क्या करना है, अपडेट करते रहना है. Sometimes it is a face of company offering it. Correct. So this is a very good thing. हाँ? बहुत बार ऐसा होता है कि लोग प्रोडक्ट को जानते हैं, उसकी कंपनी कौन सी है उनको मालूम ही नहीं होता. करेक्ट है. When I say Maggie, many more, there will be no student from you that or no faculty who don't know Maggie. ऐसा हो सकता है कि मैगी किसी को मालूम नहीं, सबको मालूम है. क्या मैगी की कंपनी मालूम है? कम कुछ कम लोगों को मालूम रहेगी. बराबर है. So Maggie is nothing but the face of that company. It is manufactured by Nestle. Correct. So Maggie becomes the face of the company. Likewise, the product iPhone, then iPad. These are the products of Apple, and now they are nothing but the face of the company. कंपनी को वो वैल्यू देते हैं, कंपनी उसकी वजह से जानी जाती है. दैट इज कॉल्ड एज फेस ऑफ द कंपनी ऑफरिंग इट. Now, after identifying the problem solution and then designing the product, first of all we have prepared a prototype. करेक्ट है. मैंने मेरा प्रॉब्लम था, समझो कि आई वांट टू keep my mobile. I want to keep my mobile. ऐसे मुझे कुछ तो देखना है, सामने बैठ के ऐसे देखना है बहुत बार, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं. तो ये मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे मोबाइल तो देखना है, उसके ऊपर वीडियोस देखने हैं, लेकिन उसको रखने के लिए कुछ नहीं है. ऐसे थोड़े हर वक्त कहाँ पे रख सकते हैं. करेक्ट. So that was my problem. Then what is the solution? I thought of various things and then this kind of invention is prepared. Just see it. जिन्होंने भी डिजाइन किया है, कैसे डिजाइन किया होगा. देखो यहाँ पे इसको हर एक एंगल से हम बिठा सकते हैं. वर्टिकल चाहिए वर्टिकल, थोड़ा इंक्लाइन चाहिए, 3 एंगल दिए है. कितना सस्ता और इजी सोल्यूशन है. वायबल है, यूज होता है, डिजायरेबल है, लोगों को अच्छा लगता है, गुड फीलिंग देता है, एंड लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाया जाता है, फिजिबल भी है. सो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, मोबाइल को रखना है, सॉल्यूशन भी फाइंड किया, इसका प्रोटोटाइप बनाया. प्रोटोटाइप मतलब व्हाट, आपको पहले उसका मॉडल बनाना पड़ेगा. कुछ तो आप पेजेस लेके भी बना सकते हो, या मड लेके भी बना सकते हो, या क्ले लेके भी बना सकते हो, कार्डबोर्ड लेके बना सकते हो. इसका मॉडल बनाया पहले, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप. फिर प्रोटोटाइप को पहले स्केच बनाना पड़ता है. पहले स्केच बनाना ड्राइंग में कि पेज के ऊपर के कैसा दिखना चाहिए, उसके बाद प्रोटोटाइप, एंड देन एक्चुअल, एंड देन आई कैन यूज इट.
So for all this process, you have to go by the design of a product design, a plan or a drawing produced to show the look and function or workings of a building, garment, or other object before it is made is called as design. करेक्ट. ऐसा थोड़ी है घर बनाना है चलो स्टार्ट किया. नो, nowadays that will not happen. First of all, the person who want to prepare a house or a home approach to the engineer or architect and ask them or demand them to prepare the plan as per the needs of the person and as per the area which is available. The plan is prepared, and after that, plan is prepared means what? It is with the help of computer or with the help of pen and paper, means drawing. एंड उसके बाद उसका डिजाइन करके हम बिल्डिंग बना सकते हैं. करेक्ट है. सो बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल ऑब्जेक्ट we have to prepare a drawing on pen paper, or you can prepare it on computer also, and then that drawing is again converted into model, that is prototype, and then the prototype is converted into final product. So that is the design. Still, let us see the example. Now this is a shoe. So somebody has designed this, correct? But before designing, he prepared various drawings of it. पहले सिंपल था, उसके बाद ये ऐड किया, उसके बाद दो स्ट्रिप्स ऐड किए, उसके बाद हर तरह से वो कैसा दिखेगा ये ड्राइंग ऐड किया, और उसके बाद वो फाइनल प्रोटोटाइप उसका बनाया, और उसके बाद उसका फाइनल शू रेडी हो गया. So like this, earbuds, first of all you have to prepare the drawings and then convert your drawings into final product. Now while preparing the drawings or while designing a product, okay, आपको कुछ product design करना है, so which points you have to keep in your mind? You have to consider these 3 points: form, function and human. While designing a product, keep these 3 points in your mind and accordingly design your product. Then definitely it will get popularity. What do you mean by form? करेक्ट है. फॉर्म कि मैंने अभी अभी आपको बोला था कि समझो कि ये मुझे मोबाइल रखने के लिए एक एक्सेसरी होनी चाहिए, तो फॉर्म के बारे में सोचना है, इसका शेप कैसा होगा. करेक्ट है. दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म. इसका कलर कैसा होना चाहिए, इसका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म. While designing a product, you have to think of the form. Then second, function. ये क्या काम करेगा, ये जो प्रोडक्ट है ये क्या काम करेगा. मतलब इसको फोन को रखना है तो क्या हम एक ही एंगल दे दें या 2-3 और एंगल दे सकते हैं या और भी एंगल इसको बढ़ा सकते हैं. फोन को रखना है, फोन को होल्ड करके रखना है, अच्छी तरह से रखना है, गिरना नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ प्रोडक्ट. करेक्ट है. और द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ह्यूमन. Who is going to use it ultimately? Human being. तो ये ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है वो ह्यूमन बीइंग यूज करेगा, उसको कैसा लगेगा, उसको अच्छी फीलिंग देगा क्या, तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है. करेक्ट. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू कंसिडर दैट द प्रोडक्ट वॉट एवर यू आर लॉन्चिंग will be used by the humans. End user is human, and you have to keep this point in your mind. So if you combine the two aspects in design, that is the form and human, then the design which is developed or created, that is called as communication design. If you combine another two aspects, that is form and function, the design which is developed is called as industrial design. And if you combine the aspect of human and function, then the most important concept, that is the design thinking concept, evolved here. मतलब आपको सॉल्यूशन निकालते वक्त क्या ध्यान में रखना है,
कि जो भी सॉल्यूशन आप निकाल रहे हो उसका फंक्शन क्या है and whether it will beneficial for human being or not. Then the concept of design thinking approach comes here. Okay. Now, what is the importance of design? करेक्ट है, क्या है डिजाइन का इंपॉर्टेंस, क्या है डिजाइन कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. फर्स्ट वन इज यूटिलिटी. वट एवर यू आर डिजाइनिंग, वेदर इट इज यूजेबल टू द पीपल or the people can, all the people can go for it or not, that you have to consider. Utility क्या है, it will work or not. Peculiarity क्या है, what is the speciality. Distinguishing features क्या है ना. समझो कि हर बहुत सारे फोन रहते हैं मार्केट में, वेरियस मोबाइल्स आर देयर, बट यू कैन गो फॉर अ पर्टिकुलर मोबाइल while purchasing it. Why? Because at that time you are observing the distinguishing features. Mobile companies are always uh, add certain features into it, and while purchasing new mobile you think of that, what is the distinguishing feature in this mobile, and for that purpose I will purchase it. Correct. So distinguishing feature is also important while designing the product. Ergonomics कैसा है, लोग शेप साइज फंक्शन कैसा है वो भी देखना है. सेफ्टी, वेदर द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग इट विल बी सेफ और नॉट. करेक्ट है ना. ऐसा कोई फोन लॉन्च किया कि जो बहुत चार्जिंग हुई, गर्म हुआ और उसका फिर ब्लास्ट हुआ, इट इज एक्सेप्टेबल? नो, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट. करेक्ट है. अगर ऐसा फोन बनाया जाता है तो एक बार अगर कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो गए तो क्या लोग उसको बाद में लेंगे, सुनने के बाद, जानने के बाद? नहीं. सो यू हैव टू कंसिडर सेफ्टी एस्पेक्ट इन द डिजाइन आल्सो. यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, एवरीबडी वांट टू लुक डिफरेंट. सो हियर जो प्रोडक्ट आपको आप बना रहे हो वो हटके होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी. आप मार्केटिंग की स्ट्रेटजी से उसको कैसे डिजाइन करते हो वो भी देखना है. अलाइंज विद द कंपनी मोटो, ये भी इम्पोर्टेंट है. कंपनी का कुछ मोटो रहता है और वो मोटो को अगर वो सेटिस्फाई करता है वो प्रोडक्ट कंपनी के मोटो को, डेफिनेटली it will gain popularity. So let us see all these aspects, utility, peculiarity, safety in detail with the help of examples. Now let us see here. Utility. What you are observing here? This is a shoe-shaped motorcycle or a bike, and this is another bike. Can you go to purchase it? How many of you will purchase it? Yes, out of, I think out of 100 or out of 500 students, maybe one who will purchase it. Correct. Why? Because you want to use this product on roads. अगर अब कुछ हटके यूनिक दिखना चाहता है कोई तो ही इसको परचेस करेगा. करेक्ट. अदरवाइज इट इज नॉट यूजेबल, इट इज नॉट viable product. Okay, this is, we are using motorcycle or bike from traveling for traveling purpose, and the purpose of traveling is again is okay here, but it is of different shape. People, all the people will look at you, and therefore the main purpose of traveling is not satisfied by this product, and therefore it will not give proper utility. Correct. Peculiarity. What is the speciality? Speciality. Now see here, this is a paperweight. You are giving your so please, I am not branding any product, or I am not doing advertisement of any product. For the presentation I am using the images, etc. So please keep in your mind. So what is this? This is a paperweight, traditional paperweight.
And what you are observing here in this diagram, the paper weight which is colorful and also showing time, date, temperature, etc. etc. So definitely certain people will buy it. करेक्ट, एक ही इसमें मुझे बहुत सारे फीचर मिल रहे हैं, जाएंगे ना, बाय करेंगे ना, करेंगे, और कीमत भी समझो ज़्यादा नहीं है, definitely it will grab market. So while doing the product design, you have to think of it. Your product must be peculiar one. What is this? This is a nail cutter. ट्रेडिशनल नेल कटर सबने देखा है, अभी तक नेल कटर यूज किया है. But what the company done while launching this product? They have given a car shape to the nail cutter. And those people, those want to some unique things, those people, there are certain people, they can collect the unique things. They use the unique things. हमारा पर्पस तो सॉल्व हो रहा है नेल कटर का, और उसके बाद हमको एक बहुत अच्छी चीज मिल रही है जो मतलब हटके है, and in the same cost, definitely you can go for this. So you can add peculiarity to your product design. Your product must be peculiar one. Ergonomics. Now, in the situation of pandemic, many people are doing their business or their office work from home, or many people are working from home, basically IT industry. Then they are constantly sitting on the chair and constantly typing on their uh, keypad. Correct. So this is a traditional keyboard, traditional keyboard. Correct. If I constantly type over this, tak 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 करते बैठी हूँ, then definitely my back and my hand get certain cramps and things, certain problem to me. It will give certain problem to me. Correct. Then some companies thought at that time, yes, people are working from home in pandemic, and definitely we can launch some good products for them because they are sitting all time in front of the laptop or the PC and using the keyboard. So can we design a keyboard in such a manner that it will be convenient to use them? Yes. And after that, they have introduced the concept of ergonomics, which will give ease to the people, those who are using it. And then they have designed the keyboards, which is comfortable for the person. That is called as ergonomics, ease to the human being. Likewise, this is an example of mouse. The traditional mouse will be like this. What they have added? They have added one another part here to keep the thumb, and new product is launched into the market. Correct. So while designing the product, we have to consider the ergonomics, ease to the person which is using it. Safety. What you are seeing in the first picture. In the first part, there are the mud pots kept in the balcony of a multi-storied building. But these are risky because if they fall down, they will create certain problem to the persons, those who are walking below or walking through the multi-storied building. करेक्ट. अगर ये गिर जाते हैं तो नीचे लोगों को डेंजर कर सकते हैं, ऐसे बालकनी में पॉट रखे तो. देन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देन safety point is considered while designing the product. No pots are created made up of plastic and slotted. So the company started the slotted pots to keep in balcony. Because of that, these are safe one. Okay, they will not fall down. We are keeping it in a slot, and safety point is considered while designing the flower plots. Okay, the next point, that is the unique selling proposition.
which bike would you like to ride, or which bike would you like to purchase? Yes, please tell me. Here in the diagram, you are seeing or observing two bikes. Which would you like to buy? Definitely the answer is right side bike, younger generation. Okay? Why? Because this is a traditional looking bike. And this is nothing but a junky punky, new, modern look, gives modern look. Okay? And the young generation maximally try to go for purchasing this sports bike. So here, while launching a product, we have to consider the unique selling proposition. The product whichever I am launching, it must be unique. मार्केट में और पहले कितने सारे प्रोडक्ट है इसका आपको स्टडी करना पड़ेगा और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो कैसा यूनिक होगा, हटके कैसा होगा, अलग कैसा होगा, उसमें क्या फीचर्स डाले जा सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले. और प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट डिजाइन यू हैव टू keep this point in your mind. Unique selling proposition aligned with the company motto. Now here you are getting two detergent powders. Once again, I'll request you. I'm not advertising any company. Okay, just I'm using the images for the presentation part. Surf Excel. What is the tagline of them? दाग अच्छे हैं, धुले जाएंगे, कितने भी गंदे हो, क्लीन होके बाहर आएगा. And that is a company motto, and they have the product has aligned with the motto of the company, and then therefore gain the popularity, gain the market. And there is another detergent, their logo was also like this one, tagline was like this one, touch on stays gentle fragrance. हाँ? दाग नहीं रहेंगे, धुए जाएंगे. But the product is not aligned with the company motto, not gain the popularity, less market. Okay, so whenever you are designing a product, launching a product, keep in your mind that what is the company's motto, the product must satisfy or align with it. So I want to develop a product, steps of engineering product through development or design. Then which are the steps? There are 4 steps. Ideation sketches, I already discussed to you. You have to first of all create or identify the problem, make or start the solution of it. क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन को आपको बाद में स्केचेस या आइडिएशन में बदलना है. स्टार्ट आइडिएशन और स्केचेस ऑफ इट. देन प्रिपेयर अ डिजाइन प्रपोजल. उसके बाद आपको डिजाइन प्रपोजल बनाना है. फिजिबिलिटी एनालिसिस, प्रिपेयर द फिजिबिलिटी एनालिसिस, मतलब फिजिबल है क्या, मार्केट में लॉन्च किया तो एक्सेप्ट करेगा क्या, पूरा देखना है. उसके बाद उसका प्रोटोटाइप बनाना है, मतलब छोटा मॉडल बनाना है. So these are the engineering steps of a product design. Now let us see one by one sketches. So these are nothing but the sketches. This is a sketch of headphone. This is a sketch of phone, sorry, pen before launching it. This is a sketch of sanitizer bottle. So how they have drawn like this. So first of all, first step is you have to draw the sketches of a product. Then after sketches, prepare the design proposal. Your proposal should satisfy the portfolio, means management strategic selection of projects. उसके बाद है प्रोजेक्ट डिजाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. मतलब व्हाट इज अ पोर्टफोलियो. समझो ऑलरेडी एक कंपनी है and the company is already producing the products which are medical based, medical supplied product, hospital supplied products is manufactured by the company. And then
The company thought of to produce some products, electrical products, or there is a plan. You are putting a plan to the company. Yes, we can also produce some product related to electronics or electrical. Then whether the company will accept your proposal, design proposal. Sometimes no. So you have to first identify the portfolio of the company and according to prepare your project and then that proposal and then that proposal if it will be accepted by the company, then the design and then management. While doing all this, you have to think what do you want to do and why? What is the best feasible in what we want to do and how are we performing? Actual, desirable, feasible, and actual after launching, we have to think how are we performing. So that is the concept of design proposal. Now after design proposal, we have to prepare the prototype. स्केचेस बनाए डिजाइन प्रपोजल तैयार किया प्रोटोटाइप बनाना है देन फॉर प्रोटोटाइप आई कैन गो फॉर ड्राइंग स्केचिंग और आई कैन गो फॉर मॉडलिंग क्ले मेटल और वुड आई कैन डू इट बाय कार्डबोर्ड सनबोर्ड और एमडीएफ or I can assemble the ready materials and the most important and the catchy part here that is the rapid prototyping which is nowadays gaining more popularity. So let us see the examples of rapid prototyping. See here. What do you mean by rapid prototyping? So this is the symbol or this is a sketch of a product which is made with the help of computer and then this is the final product. Same here. This part is made with the help of computer designed and then this is done actual product. So there are certain techniques that is called as 3D printing. That is called as rapid prototyping is done with the help of 3D printing. This is a recent technology, new technology. And I am proud here that we are having a 3D printer in our AGPIT campus. We have already prepared 4 to 5 models, small models. Through it, you have to मतलब बाकी प्रिंटर की जगह जैसे प्रिंटर होता है ऐसा नहीं है ये इट हैज़ लॉट ऑफ मशीनरीज विथ इट आल्सो so that is the 3D printing technology. I request the students of AGPIT if you want to do some best projects through it you can come and approach to the mechanical department. It is kept in the mechanical department a 3D printing machine and take advantage of this 3D printing machine. And let us see the example here. The plan of a house or a building made out of a 3D printing. First of all, the plan is prepared on the computer and then it is fed to the machine and then the model is developed or a prototype is developed. It has lot of technologies or terms related to it, but you must aware that prototyping is done nowadays with the help of 3D printing technology. Last but not least, after doing sketching, then preparing proposal, then doing prototyping, before launching the product or after launching the product, take a feedback from the customer. It is a very important thing. फीडबैक करेक्ट है आप देखते हैं कि आप जब ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने अभी तक परचेज किया होगा अमेजोन फ्लिपकार्ट या और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जिसके ऊपर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं व्हाट दे आर डूइंग दे आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स from each and every customer they are taking feedback and the feedback is something incorrect or wrong then definitely they will take action over it and they will accordingly they change their product or their policy. They are constantly taking feedback and working over it and therefore they are maintaining their position in the market. Those companies they will neglect the feedback of customers
then they will lag behind. Right? So that is a very important thing, feedback. In our institute also, we are constantly taking feedback from the students, alumni, parents, society, and we are upgrading our institution, means academics and other things we are updating from time to time. And therefore, we will be in the market. Correct? So, what is the purpose of feedback? Provides end users perspective, test the ground level acceptability, whether the product we are launching will be accepted by the people or not. It will test, and then helps to improve the product, yes, or helps to improve the service. It is more useful, and sometimes it is discouraging. At that time, just we have to neglect it, and we have to go. Now, the last part, that is the market fit. Correct? We have discussed it till the time regarding the product. What do you mean by product? What do you mean by prototype? How to prepare a design proposal? Correct? So that steps we have identified, we have discussed, and now product is ready. I want to launch into market. So let us say the example. This product is ready now. Prototype is ready. Product is ready. I want to launch into market. Whether this product will fit to the market or not, that I have to see. Understanding the market need. मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ उसकी मार्केट को ज़रूरत है कि नहीं. समझो ये जो प्रोडक्ट है फोन स्टैंड वाला, अगर ये 20 साल पहले या 25 years बैक इसको अगर कोई लॉन्च करता तो क्या इसको मार्केट मिलता? नहीं. जब मोबाइल यूज ही नहीं करते थे लोग, अगर उस वक्त हम ये प्रोडक्ट बना के लॉन्च करते तो क्या यूज इसका कुछ यूज होता? नो. सो अंडरस्टैंड द मार्केट नीड एंड टाइमिंग ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी राइट. जब इसको मार्केट ही नहीं था तब इसको लॉन्च करना गलत बात है. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, मार्केट में इसकी जरूरत है क्या, और इसका लॉन्च करने का टाइम करेक्ट है क्या. सो दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ यू लॉन्च योर प्रोडक्ट by doing this study, then definitely you will grab the market. Then continued innovations, आप प्रोडक्ट में कर रहे हैं क्या, कस्टमर के फीडबैक ले रहे हैं क्या, और उसके बाद आप प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. प्रोडक्ट मस्ट फिट टू इट्स वैल्यू फॉर द एंड यूजर. Okay, so these are the things by which if you launch the product in market, then definitely it will get a correct fit to the market. Now there are certain products which are launched but not gain the popularity, and certain times they are not in the market now. और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वो प्रोडक्ट कंपनी को बंद करना पड़ा है. सो व्हाट इज द रीजन? What are the reasons of that? So let us see the example of Windows Vista. Correct? We are using the various operating system. Now Windows Vista has not nowadays used by the people. Why? Because it was designed complexly. When the users are using it, when the users were using it, they are not uh, means feel good one when they are using it. It was giving a feeling of complexity. तो इसकी वजह से विंडोज विस्ता पॉपुलर नहीं हुआ, एंड ये फिर बाद में दूसरे प्रोडक्ट ने इसको रिप्लेस किया और ये फिर बंद हो गया विंडोज विस्ता. सो दैट इज वाई कॉम्प्लेक्सिटी एंड फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लॉन्चिंग प्रोडक्ट. Market need. Earlier we have talked about this. Market need. What is the need of market? Traveling, producing a vehicle, or they need a vehicle to travel. But if you launch such a type of vehicle in the market,
whether the people buy it or not, that you have to identify. अगर मार्केट को ऐसी चीज की जरूरत है क्या, ऐसे व्हीकल की, अगर जरूरत ही नहीं है तो क्या आप मार्केट ग्रैब कर सकते हो क्या? नहीं. सो दैट इज द थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द मार्केट. अगर ऐसी चीजें, गलत चीजें आप अगर लॉन्च करोगे, जरूरत ही नहीं है, तो वो ऑब्सलीट होती जाएगी, बाद में वो बंद हो जाएगी. Continuous innovation is necessary in product. I already discussed. Nokia, one of the best company in feature phone manufacturing. Now it has stopped. Why? Feature phones it has stopped because after the invention of Android phones, they have stuck to their own traditional methods. They have not innovated their technologies. Their feature phones they have not innovated, and therefore the feature phones models of Nokia stopped, and the company was at lost in loss. So continuous innovation is necessary. Aspiration. Let us take the example of Tata Nano. While launching the car, they have done the marketing like you have to buy 1 lakh rupees car. Let us buy a car in 1 lakh rupees. Okay, good one, good marketing strategy. But it is the fact that the Tata Nano car rarely comes for 1 lakh rupees. It is more than 1 lakh rupees. This is the real fact. You have to give more than 1 lakh rupees for the car. Then people are thinking like this that I am buying a car which is more than 1 lakh rupees, and then also it is getting a tag of 1 lakh rupees car. Then what is good in that? And the society or the people look at me that he is carrying a 1 lakh rupee car, then it is not good human aspiration. It is not giving the good feeling to the person who is buying it. लोग क्या बोलेंगे, अरे रे वो तो 1 लाख रुपए की कार चलाता है, कैसे लगेगा? So apart from this, if they have made a marketing like this, we are producing a small and uh, good, smart looking cars. If they will make advertisement like this, definitely there will be chance for them. क्या हम ऐसे बोल सकते कि शायद वो मार्केट में रह सकते थे, लेकिन उनकी जो टैगलाइन थी कि 1 लाख रुपए की कार, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है कि हम 1 लाख रुपए की कार चला रहे हैं. तो ये इन्होंने इस टैगलाइन ने या ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने प्रॉब्लम किया. ह्यूमन एस्पिरेशन को कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, और देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज नाउ स्टॉप्ड बाय द टाटा. Correct? The aim was good one, the motto behind it was good one, but the strategy or the plan through by which they have launched, that is not uh, good one, and therefore they have to stop their uh, manufacturing of this Tata Nano car. Okay. Before ending my session, I just summarize it in 2 or 3 minutes. That is, in the session, today's session, first of all, we have discussed that for becoming an entrepreneur, first of all, try to identify 3 types of fit. If you have decided to become an entrepreneur, try to identify or try to work on 3 types of fit, which are those: problem solution fit, product market fit, and then enterprise model fit or business model fit. If you work on these 3 types of fits and accordingly launch your product, you must be successful one. Correct? And in that, initially we have discussed how to identify problem and how to get the solution of it by applying a logic of design thinking. Then in the next part, we have discussed of the product
and market fit. What do you mean by product and what do you mean by market? How to prepare a design proposal, research proposal, and then how to make a fit between the product and market, and then how to launch a product. So we have discussed these aspects of enter, uh, entrepreneurs, product market fit, and these two fits we have discussed. But before ending, I want to say you one quote that is, become a job creator, don't become a job seeker. It is my appeal to all my dear students or to my faculties also, become a job creator. Because if you become an entrepreneur, you can give jobs to hundreds or thousands or maybe to the more than this. And definitely, if you will become a job creator, it will give economy to the city, to the country, to the world. The economy get increased and it will helpful for to the country also, because the ultimate aim of this AICT or IIC is to encourage students to become entrepreneur. And we as a AGPIT, all team is here, IIC team is here, which is always there to help you. And one entrepreneurship development cell is here. I want to mention here before ending that we have uh, get one system, one rank from AICT, one grant from AICT of this research development lab. Here we are developing this research development lab research center here, and you can take advantage of it. You can take help of IIC members or this research development members and become an entrepreneur. This is my appeal to all of you. And with this, I sincerely mention thank to all the students and faculties for patient listening. Thank you. Thank you, ma'am. Also.